why everyone is feeling that that has happened is because inclusive of 18% that ওই পার্টটা একটু ক্ল্যারিটির সঙ্গে এলে ভালো হতো, যেটা এখন আসছে। ওকে, সো Yeah. গৌতমদা, Good morning. Vivek, please Yes. introduce Yeah. Sudip. Very good morning, sir. Thanks a lot Morning. for taking out time for us on a Saturday morning. So, and thanks to the entire audience for being on time so that we can start the meeting at the earliest. So, a very brief discussion means a very brief introduction about Sudip sir. We have known Sudip sir for quite a long time, but a formal introduction is required very much right now. So, Mr. Sudip Mondal is currently heading marketing at Motilal Oswal AMC, and prior to that, he has a huge experience across various verticals, right from starting from Kotak Mahindra Bank to ICICI Lombard, Bajaj Allianz Life Insurance to ICICI Prudential AMC, and his assignment prior to Motilal Oswal, he was there at DSP BlackRock Mutual Fund as AVP Marketing and co-head marketing at DSP Mutual Fund. And as regards his qualification, I don't have much of information. I would request Sudip sir to kindly share that details in this thing before we start. So the session is all yours. So basically, I feel everyone is comfortable with Bengali and A mix English, of Hindi, Hindi and all. and Mixture of Hindi and Hindi and Bengali. English will do, because we have a larger audience wherein there are lots of people who don't understand a single word of Bengali, right? So it will be a mix of Fine. Hindi So and I'll English. keep it, yeah, Hindi and English. Yeah, sure. So very good morning to you all. आप लोगों का बातें सुन रहा था, and it's a pleasure always interacting and coming in between our distribution partners and address them. So this Requesting everyone to please stay on the mute domain mode. is very close to my heart, and I have been with mutual fund for the last almost 2 decades, right? So I've seen this industry in and out for quite some time, since the evolution of unity load to to the birth of RIAs, then how this entire landscape have transited from a distribution mode to advisory mode. The challenges that people have faced, and also so on and so forth. But having said that, I think we are all there is no second thought that we are in one of the best professions, and annuity as a business is a fantastic business. I mean, there's no second thought about it. So yes, there are challenges, there are regulatory challenges which we will overcome. But my only and I think there is people like Gotunda association, like IKEA and all of that are doing a very good job. So the representative, I'm sure, is going to take up, address it, have place this in appropriate forums, to address those issues. But my only request is that all these challenges will come and go. Don't have to hold it for very long. The moment there are association people who can represent these thoughts. I mean, this message is not for them but for the others. Yes, raise your concern, but don't bring it to your heart and start impacting your business growth. And that's very important, right? Many times you hold the glass and for so long the grudges, and then we end up spending a lot of time in kind of in such discussions, which is important, but place it to the forum. But equally important is serving our clients, and shifting our focus energy towards servicing and ensuring that जो client servicing या जो clients के साथ हम लोग time बिताते हैं वो सबसे ज्यादा होना चाहिए, right? So मेरा entire objective of आज का presentation जो है all leads to how can you grow your business. Now business growth ना हर जगह से आ सकता है, like आप फिजिकल मीटिंग कर रहे हो उससे आपका बिजनेस ग्रोथ हो रहा है, दैट्स गुड इनफ, कंटिन्यू डूइंग दैट. लेकिन क्या है कि अभी समय के साथ का लाइफ इतना फास्ट हो गया है, एंड लाइफ फास्ट जब मैं बोलूंगा फास्ट हो गया है, इट इज नॉट दैट ऑल ऑफ अ सडन लाइफ हैज बिकम फास्ट. टुडे व्हाई द प्रॉम्प्टनेस एंड फास्टनेस इज रिक्वायर्ड इज बिकॉज हम लोग का आदत काफी बिगड़ गया है. लाइक जोमेटो 30 मिनट्स में डिलीवरी, आपको रात को 2 बजे आइसक्रीम खाने का मन और ब्लिंकेट कर दिए, 10 मिनट में आइसक्रीम आ गया. सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट इवेंचुअली लाइफ इज बिकमिंग वेरी 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 फास्ट. जो हम लोग चाह रहे हैं ना, द ग्रेटिफिकेशन इज
becoming very more and more instant, और हम लोग जिस बिजनेस में है उसका ग्रेटिफिकेशन इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन, राइट। और बाकी जो बिजनेसेस है, जो ई कॉमर्स है, फूड रेस्टोरेंट्स है, जो हमारा बाकी का सामान है ना, वो काफी इंस्टेंटेनियसली हम लोग मांग रहे हैं। इवन फॉर दैट मैटर बैंकिंग, आपको पैसा भेजना है, आईएमपीएस कर रहे हो, इमीडिएटली पैसा चला जा रहा है। सो इट हैज एवरीथिंग हैज बिकम सो इंस्टेंटेनियस, एंड इन दैट इन्वायरमेंट आप जब डिलेड ग्रेटिफिकेशन की बात करते हो तो लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है, हमारा नेक्स्ट पीढ़ी को समझ में नहीं आता, right? So therefore the task for us becomes way more important, and wo inculcating that habit of patience and all is important. Having said that, right, having said that, ये तो challenge है, but in our other aspects of client interaction, trust building, communication, how do we make it efficient? How do we make it very fast? How do we make it इम्पेकेबल? इम्पेकेबल मतलब गलती फ्री, स्मार्ट, जैसे जोमेटो काम करता है, जैसे स्विगी काम करता है, उसका डिलीवरी में गलती नहीं होता है। आप उस पर एक ऑर्डर करो, आपका ईमेल फटाक से आ जाता है, डिलीवरी स्टेटस आ जाता है। क्या हम वो इम्बाइब कर सकते हैं? नाउ आज का दिन में ये इम्बाइब करना डिफिकल्ट नहीं है, राइट। डिफिकल्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ नहीं है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ टूल्स विच आर अवेलेबल टुडे दैट कैन हेल्प यू आउट। नाउ ये टूल्स ना कोई एंड यूज टूल्स है, दिस आर ऑल टेक्नोलॉजी टूल, बट वी आर नॉट इन द गेम ऑफ मेकिंग टेक्नोलॉजी, हम लोग उस बिजनेस में ही नहीं है, हम लोग वी आर द यूजर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यूज करने के लिए, जो हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, वो यूज करने के लिए हमें जानकारी होना चाहिए तो हाउ टू यूज इट, राइट। सो फ्यू टूल्स दैट कैन हेल्प यू क्रिएट few communication that can help you do something faster, आपका productivity increase हो जाएगा। Those are the tools that we're going to talk today, right? And what you're going to see is very very practical tool जो आप यूज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यार सुदीप आप ऐसे बात कर रहे हो जो हम यूज नहीं करते हैं, then we will not talk on those topic, we will jump on to something which you can practically see using it, right? And if you can get benefit of that. So that's the broad background of it. Regarding my education, I'm like as all Bengalis, I belong to Durgapur. So Durgapur में जो भी like people who are from that side of city, there are only two fields which parents push you for: engineering, doctor. So I become an engineer. After that, I did my MBA. Like I did my post graduation from IIT Madras, and since then I've been working in the BFSI sector. Okay, now not taking too much of time, Vivekda, thank you very much for that, kind introduction. Thank you, Gautamda, for organizing this. I know the zeal with which you and your team works, but it's really, appreciable, and I really acknowledge that a lot, because I see Gautamda a lot coming to Mumbai, and the entire team, coming to Mumbai, the way you organize your meetings, the kind of difficulties, it's not very easy to cut through those meetings and having your point established over there, but you guys do a fantastic job over there. Great. So with that note, let's us start. I'm going to start from the very very basics. I'm not in a rush. If required, be it's like we have friend conversing. So wherever you feel like, unmute yourself, ask a question. That's absolutely fine. If we cannot conclude, I am not in a rush. I am not going to look at the watch when I am talking. If required, we will do a second part of it, right? So if you guys feel interesting and all, we will do a second part of it, but I don't want to rush it and not ensure that everyone doesn't get it, right? I want everyone to get what I'm saying. I will start from very very basics and very scratch, so that you don't find it difficulty in understanding it. Is that okay? Am I audible? Everything is clear? Yes, sir. Yeah, I will perfectly just share audible. my screen now, ठीक है? Yeah. आप लोग से अभी ना सुनिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये वर्कशॉप जैसे काम करेंगे। अगर को पैरेलली 5 मिनट के लिए आप बोलोगे सुदीप रुको, मेरे को एक बार ये काम करना है और करके देखना है खुद से, तो हम पॉज लेंगे, वी विल टॉक अबाउट इट, बट वी विल नॉट मूव अहेड एंड अनटिल अनलेस यू गेट दैट हैंड्स ऑन। अगर ये आप आज का टॉक में से एक भी अगर आपने टेक अवे लेके चला गया है, दो टेक अवे लेके, दैट इज गुड इनफ फॉर यू, ठीक है, दैट इज गुड इनफ फॉर यू। अब हम लोग ना मतलब आई एम एज्यूमिंग दैट नॉट एवरीवन इज बजाज स्कूटर जैसा काम करेंगे, ठीक है। थोड़ा एक दो बार किक मारना पड़ेगा, मारने के बाद जब चालू हो जाएगा, पहले का जमाना का बजाज स्कूटर था ना, वैसा है, ठीक है। तो अभी हम लोग को किक स्टेज में है, गाड़ी थोड़ा थोड़ा झुका के पेट्रोल ला रहे हैं,
ठीक है, उस स्टेज में है, तो हम वहां से चालू करेंगे। ठीक है, तो वो किक मारने में कभी एक किक में स्टार्ट हो जाएगा, कभी दो लगेगा, तीन लगेगा, बट विल वेट, एंड वंस इट स्टार्ट इट विल फ्लो स्मूथली, इट विल कम इन योर ब्लड। ठीक है, ओके। सो लेट मी शेयर माई प्रेजेंटेशन नाउ। ये प्रेजेंटेशन मैंने किसी और ऑडियंस के लिए बनाए थे परसों। आई नो आई मेड गौतम दा बोला कि नहीं ये करते हैं। मैंने आई वाज सेड दैट लाइक थोड़ा टाइम दो, लेट मी मेक अ प्रेजेंटेशन। बोलता नहीं नहीं नहीं, इट विल बी अ गुड इंटरेक्शन, आप कर लो इसी में। तो मैंने बोला ठीक है। So it's an old presentation. I have not revisited the presentation, but I think it's good enough for us to have the discussion. Okay. Let me share this. Okay. Okay. ये अभी बना ही रहे थे, मैं सवेरे अभी जस्ट खोला। Okay. Can you all see my screen? Yes, sir. It's perfectly visible. Yes. Okay. Okay. So okay. Fair point. So how can you leverage AI to grow your business? AI का मतलब क्या है? I would say means not going in Artificial depth, intelligence. abbreviated form of artificial intelligence. Okay. So it's like how to enhance advisor investor relationship. ठीक है, A is for advisor, I is for investor, but basically artificial intelligence ही है। बट हमारा काम ये रहेगा, आपके लाइफ में इन्वेस्टर को आप कैसे और ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पाओगे इसको यूज करने में। ठीक है, सो AI is Uh, probably the most important thing that humanity has ever worked on. yeah, I it stands for alternate investment also. Yes, but in for today's interaction, it is artificial intelligence is one, and before that, it is advisor investor relationship. So Yes. whatever you're going to learn, how can you leverage AI in enhancing advisor-investor relationship is what the topic is all about. That has to boil down to enhancing our relationship, increasing wallet share, increasing client penetration, trustworthiness कैसे बढ़ा सकते हैं UI को use करके, so all those client centricity achieve करने के लिए और enhance करने के लिए हम लोग AI को कैसे leverage कर सकते हैं, that's the topic about it. Okay, so some background about it. AI is probably one of the most important thing that humanity has ever worked on. I think of it as something more profound than electricity or fire. क्या आप लाइफ इलेक्ट्रिसिटी और फायर के बिना सोच सकते हो आज के डेट में? No one can think of. So this is Sundar Pichai coming and making a statement like this. And ये आज का ये प्रेजेंटेशन में एक साल पहले पहले बनाया था जब चैट जीपीटी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था। तो आई वाज सो यू नो इस स्टेटमेंट पढ़ के मेरे को लगा कि ऐसा क्या हो रहा है कि फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी के भी बड़ा चीज अब बनने के लिए जा रहा है। So therefore, what it is important is that this has got huge potential, huge gravity. There is no doubt about it. I think everyone is convinced about that. No more spending time. So अभी पहले learning था, thinking था, creativity, consciousness, ये जो आप awareness, manifestation, reasoning, syntax, ये सब अभी ये कर रहा है। Awareness और conscious is the only part that is left out of. Rest of the thing, ये creativity बोलो, reasoning बोलो, learning बोलो, everything this machine is able to do today, right? And what I am going to show you today is some of the examples which I am using it, how I am using to create content, how I am using to do research, how I am going to leverage, and whichever tools I am leveraging, I am going to give you a hands-on on those tools. So it's not any bookish knowledge, or you will get this presentation anywhere. So pay attention. Chat GPT का मतलब क्या है, किसी को पता है? Anyone can unmute and say what is GPT? एक साल पहले तक बहुत डिफिकल्ट था इसको एक्सप्लेन करना। आज का डेट में मेरे ख्याल से इट हैज बीन स्पोकन अ लॉट अबाउट। सो चैट जीपीटी स्टैंड्स फॉर जनरेटिव प्रोग्रेसिव वन से जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। सो जनरेटिव मतलब इट विल जनरेट, प्री ट्रेंड है मतलब द मशीन इज प्री ट्रेंड विथ लॉट ऑफ कंटेंट कॉन्टेक्स्ट एंड विल सी अबाउट इट। थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। व्हाई? बिकॉज then you will be able to leverage, and you will be able to validate the answers that the machine is giving. So therefore it is important that where it is learning from. So generative pre-trained transformer है, that's architect, और ये pre-train होते जाता है। तो ट्रेनिंग जब होता है ना तो certain particular टाइम तक होता है। सो यू हैव टू सी टिल व्हाट टाइम दिस मशीन इज ट्रेन्ड फॉर, और दिस प्लेटफॉर्म इज ट्रेन्ड फॉर, राइट? सो कुछ कुछ जो पेड वर्जन है वो कंटिन्यूअस ट्रेन होता है, कुछ कुछ जो फ्री वर्जन है वो सर्टेन पीरियड तक ट्रेन रहते हैं। तो उसके बाद का हो सकता है इन्फॉर्मेशन मोस्ट एक्यूरेट ना मिले, वो भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, सो देखो व्हाट वी आर, द बिजनेस दैट वी आर इनटू इज बेसिकली हाउ कैन वी गेन आवर क्लाइंट्स ट्रस्ट एंड उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं टू गिव अस मनी, पीरियड। अभी वो आप लिप सर्विस से दो, मतलब लिप सर्विस में यू हैव द स्टोरीज दैट यू हैव टू शेयर विद देम, जो कहानी आप बताते हो,
जिस तरीके से बताते उससे अगर कन्विंस हो गया, दैट्स ग्रेट इनफ यार, वो आपका काम बन रहा है. दैट इज आवर जॉब, राइट? आवर जॉब इज टू इन्फ्लुएंस पीपल to shift their money from bank and other low return instruments to equity market which has the potential to pay you more. Now ये जो ट्रांजिशन ही जॉब अपना है, जाके कन्विंस करके वो ट्रांजिट करना है. सो टू इन्फ्लुएंस दैट, राइट? सो इन्फ्लुएंस, द टू वेरी इंपॉर्टेंट स्किल सेट दैट यू वांट, दैट वन शुड हैव एज अ डिस्ट्रीब्यूटर इज हाउ कैन यू बी मोर इन्फ्लुएंशियल, राइट? एंड हाउ कैन यू, अगर आप लेवल ए में है तो बी में कैसे जा सकते हैं, इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं, राइट? नाउ एंड इन्फ्लुएंस करने के लिए क्या चाहिए? नाउ इन्फ्लुएंस, आप किससे इन्फ्लुएंस होते हो? आप थोड़ा सोचो बैकग्राउंड में, आप अपना लाइफ में किससे इन्फ्लुएंस होते हो? चिल्ड्रन गेट इन्फ्लुएंस बाय द पेरेंट बिकॉज दे सी हिम एज द हीरो, राइट? हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं बाय, ऐसे फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या अपना एक्टर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या किसी से इन्फ्लुएंस होता है बिकॉज दैट गाय हैज सम अथॉरिटी, हम बिलीव करते हैं वो जो बोल रहा है सही कर रहा है, ठीक है? सो देयरफॉर देयर इज अ अथॉरिटी बायस दैट वर्क्स इन पीपल्स माइंड. दैट इज वन बिट. सेकेंडली, राइट, देयर आर समथिंग कॉल्ड सोशल प्रूफ. आप जब अमेजन में खरीदते हो तो आप देखते हो यार ये कितना, 500 लोगों ने इसको रेट किया और 4.5 रेट किया, तो ये सामान अच्छा होगा, तो सोशल प्रूफ हो गया. या आप जब मूवी जाते हो, आपको आपका दोस्त बोलता है यार मूवी बहुत अच्छा है, जाके देख के आना, आप चले जाते हो, राइट? So therefore, social influence plays a very important role in our mind, and that is where you will see your biggest source of clients is through referral, because that is coming through a social proof. जिसने आपका सर्विस एक्सपीरियंस किया है, वो अगर किसी को बोल रहा है यार उस बंदे को ट्रस्ट करना, वो अच्छा काम करता है, दैट इटसेल्फ इज अ ह्यूज टिक मार्क. फॉरगेट अबाउट योर क्वालिफिकेशन, अबाउट ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग. So therefore, that has become the biggest source because वो social proof होके आ रहा है. Someone you know, you trust, he is recommending. Therefore, it should be good. ये assumption है. Now these are very very behavioral science aspect. So authoritative biasness, social proof, right? स्केयरसिटी प्रीमियम, जब सेल लगता है बाजार में तो आपको बोल देता है कि यार ये डिस्काउंट अवेलेबल टिल 30th. रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा यूज करता है सर, ये ना कल से प्राइस बढ़ने वाला है. तो व्हाट दे डू, प्राइस से कुछ चेंज नहीं हो रहा है, व्हाट दे डू इज दैट दे ब्रिंग इन स्केयरसिटी प्रीमियम. मतलब ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, ठीक है, इसके ऊपर ये बढ़ जाएगा, तो आपको एक एक टाइम लिमिट के अंदर आपको डिसीजन लेने में मजबूर कर रहा है, राइट? सो देयरफॉर दोज आर द प्रिंसिपल्स जो कि इंश्योरेंस, ई कॉमर्स, ये सब अच्छे से यूज करता है to kind of influence you or to make a decision, right? Now can we adapt some of this principle in our communication and all? ये just ये क्वेश्चन मार्क रख के अपने दिमाग में रख दीजिए, park this aside, right? Now do you want to increase now आज का increase our quality of work, boost productivity, automated repetitive tasks, save time and energy? अगर ये आपको करना है तो probably ये सेशन आपको हेल्प करेगा, right? Now मैंने इसको बोला कि the machine is trained on प्री ट्रेंड है, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर है. तो प्री ट्रेंड जब रहेगा तो किस पे ट्रेंड है? नाउ दिस आर ऑल एलएलएम, मतलब दिस आर ऑल मशीन लर्निंग कर रहा है, व्हिच इज टेक्निकल टर्म, वो छोड़ दीजिए. दिस मशीन, और जो आप चैट जीपीटी या जो भी जेमिनी, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करेंगे, हम देखेंगे कुछ प्लेटफॉर्म जैसे, these are trained on vast amount of data which includes books, articles, website में सब जगह से जाके ना ये ट्रेंड है वो सब चीज में. सो आप जब कुछ बताते हो तो वो वो बुक से, वेबसाइट से, जहां पे भी इंफॉर्मेशन मिलता है उसको रेफरेंस लेके आपको एक आंसर देता है, राइट? सो दिस इज ट्रेन. नाउ सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं होगा, देर इज समथिंग कॉल्ड कंटेक्चुअली रेलिवेंट. ये आपको इतना इंपॉर्टेंट और अच्छा क्यों बना देता है? क्योंकि आप जो पूछ रहे हो ना वो कंटेक्चुअलाइज कर देगा. कंटेक्चुअलाइज रेलिवेंट का मैं मतलब बहुत आसान तरीके से बताता हूँ आपको, और हमारी भाषा में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को समझ में आता है, और आपको आपको अच्छा लगेगा. आप सुनिए ये. आई वाज इन बैंगलोर, एंड बैंगलोर में आई वाज विद अ डिस्ट्रीब्यूटर, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. तो मेरा मीटिंग खत्म हो गया तो मैंने उसको बोला कि यार 3 बजे फ्री हो जाऊंगा, मिलते हैं. तो उसने बोला यार 3 बजे आई हैव ए क्लाइंट कमिंग इन, तो उसके बाद ही मैं जा पाऊंगा, तो 4 बजे. तो मैंने बोला ठीक है, आई डोंट वांट टू वेट आउट, आई विल आल्सो कम एंड ज्वाइन यू. तो ठीक है आ जाओ. So I went there and I didn't introduce myself as like working with an AMC or something like that. He was a friend of mine. I went and sat next to him, and the client came at 3:15. Young guy, 30-year-old, working in an MNC IT company. तो आके उसका सेकंड मीटिंग था, तो दे वांट ही वांटेड टू स्टार्ट सम एसआईपी एंड ऑल.
So the distributor was trying to convince him on goal-based planning and all, talking about emergency fund, talking about retirement, talking about wealth creation, all of that. तो बंदा से जब बात कर रहा था तो एक दो चीजें जो मेरे को वो स्ट्राइक किया कि उसने बोला कि यार यू शुड हैव इमरजेंसी फंड। तो बोला ये इमरजेंसी फंड क्या है आप? तो बोला कि यार आपका जब भी कुछ रहेगा 3 मंथ्स एक्सपेंसेस, 3 to 6 मंथ्स एक्सपेंसेस क्लियर करने के लिए आपको एक फंड ऐसे बनाना चाहिए। तो बोलता है यार मेरा जरूरत नहीं है, आई हैव क्रेडिट कार्ड, वो स्वैप कर लूंगा, 2 लाख का लिमिट है, 2 लाख इज गुड एनफ फॉर मी। ठीक है, सो मेरा सैलरी है 2 लाख में, लाइक मेरा 3 महीने का खर्चा 2 लाख से कम ही है, तो क्रेडिट कार्ड है तो क्यों सोचने का। तो वो डिस्कशन से आगे बढ़ गया, फिर उसका रिटायरमेंट की बात किया। तो रिटायरमेंट में उन्होंने बोला कि देखो मैं अभी 30 साल का ही हूँ, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग इज गुड, रिटायरमेंट का कॉर्पस सोचना चाहिए, बनाना चाहिए, बट आई फील इट्स वेरी फार ऑफ राइट नाउ, राइट मेरा अभी मेरा एरिया से वो दूर है, लेकिन अच्छा ये सोचेंगे बाद में। ठीक है, तो टिपिकल इन्वेस्टर बिहेवियर पोस्टपोन कर दिया। एंड देन इससे दैट चलो मेरे पास पैसा है, 25,000 का एसआईपी चालू करना है, ठीक है, अभी इसको वेल्थ क्रिएशन का गोल बना के चालू करते हैं। ठीक है, so that's where I was also there, so I pitched in and said that आप कहाँ काम करते हो? तो बोला कि मैं एमएनसी में काम करता हूँ, ये आईटी में। मैंने बोला कि कौन सा सॉफ्टवेयर में काम करते हो? तो उसने बोला .NET इसमें काम करते हैं। तो मैंने बोला कि आर यू ट्रेंड इन दिस लैंग्वेज? बोलते नहीं, मैं और एक दो लैंग्वेज में ट्रेंड हूँ, बट अब मेरा प्रोजेक्ट जो अभी चल रहा है इसी में चल रहा है। मैंने बोला कि अगर ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए तो क्या हो जाएगा? बोला कि नया प्रोजेक्ट जाएंगे। हमने विल दैट लैंग्वेज अगर डिफरेंट लैंग्वेज में रहा तो क्या करोगे? तो बोलोगे देखो वी आर आइदर पुट ऑन बेंच एट दैट पॉइंट इन टाइम, and either you have to pick up that language or wait for a project that मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ और मेरा जिसमें डोमेन एक्सपर्टाइज है उस प्रोजेक्ट का वेट करेंगे। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट रफली अराउंड 2.5 3 years ओल्ड, राइट। तो उन्होंने बोला कि अच्छा और अगर फिर भी मान लो प्रोजेक्ट नहीं आता तो बोलते हैं 3 महीना में दूसरा जॉब मिल जाएगा, जॉब ढूंढना पड़ेगा 3 महीने में, अगर वो लैंग्वेज नहीं मिलता है तो पुट इन मीन टिपिकली देन यू लुक फॉर अनदर प्रोजेक्ट एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड अ जॉब। हाँ, सो 2 3 महीने में मिल जाता। तो मैंने वो 2 3 महीने का खर्चा क्या क्रेडिट कार्ड चला? तो बोलता हाँ 2 3 महीने का रहेगा क्रेडिट कार्ड चलेंगे। मैंने व्हाट इफ तुम्हारा जो 2 3 महीने का खर्चा है टिल यू फाइंड द नेक्स्ट जॉब, अगर एक कॉर्पोरेट क्रिएट कर देते हो सो डोंट हैव टू रिलाई ऑन योर क्रेडिट कार्ड, आप उससे काम कर सकते हो। देन ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट बिकॉज इट हैज एग्जैक्टली हैपेंड विद वन ऑफ हिज फ्रेंड। तो बोलता हाँ ये सोच सकते हैं। नाउ देखो इसमें व्हाट हैज हैपेंड इज दैट इमरजेंसी फंड उसके लिए था नहीं। नाउ what he has said, instead of placing it as emergency fund, if you place it as a fund that will help you carry on with your life without any stress till you find your next job, तो बोला हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये कर सकते हैं। द सेम ओल्ड गाय 30 साल का जिसको आप इमरजेंसी फंड करके बेच रहे थे वो नहीं खरीदा, बट उसका बोलो कि एक फंड दैट विल हेल्प यू कैरी ऑन विथ योर लाइफ टिल यू फाइंड द नेक्स्ट जॉब इज समथिंग रेलिवेंट फॉर हिम। नाउ दैट हैज बिकम contextually relevant for him, right? Now that guy is at least open for thinking रिटायरमेंट हाँ दूर है, लेकिन वो ये नहीं बोल रहा कि खराब है। हाउ डू यू मेक इट रेलिवेंट फॉर दिस गाय, राइट? तो वो जो है ना वो दैट्स एन आर्ट, एंड दैट इज द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग दैट वन नीड्स टू लर्न कि इसमें कैसे प्लेस करूंगा, क्योंकि उसका जो कंसर्न है दैट कंसर्न कैन बी वेरी डिफरेंट। नाउ कैन नाउ व्हेन यू आर राइटिंग और व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ कंटेंट, अगर ये अवेयरनेस आपके साथ रहा ना देन दिस मशीन कैन हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज ये आपको कंटेक्चुअली रेलिवेंट केसेस बना के या स्टोरीज बना के या राइटअप बना के देगा। सो इट्स ट्रेंड ऑन बिकॉज एज ह्यूमन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, जब हम क्राइसिस मोमेंट में रहते हैं तो हमारा इमोशन इमीडिएटली निकल आता है। जब हम मेल लिखते हैं एक गुस्सा है आपको, यू आर फ्रस्ट्रेटेड विद समथिंग एंड यू राइटिंग एन ईमेल, दैट फ्रस्ट्रेशन विल कम इन योर राइट अप, राइट? बट इफ यू राइट दैट फ्रस्ट्रेशन ईमेल आपने लिख दिया बट उसको बोला कि यार इसको थोड़ा पोलाइटनेस करो, ह्यूमन बनाओ, contextually relevant बनाओ, इमोशन बाहर कर दो, देन इट विल apply all the behavioral science, all the words that are not emotional, और ऑल द ह्यूमैनिटी क्या क्या हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं टू मेक दिस सेम कम्युनिकेशन साउंड गुड, साउंड बेटर, इट विल हैपन, राइट? So that's the meaning of contextually relevant. It was very important, and this is what makes chat gpt and all the llm models so powerful, right? So where all you can use chat gpt at work, you can use it in marketing, customer service, hr में you team बनाना है, jd create करना है, ये create करना, all of that you can use, right? Now I will just take a small pause over here. Are you guys using chat gpt? Just Yes. honest here, how many of you are using from this group of 67 that is locked in? Gautam, on an average, just tell me from your gut feeling, how many of them must be using ChatGPT? Sir, I have been using ChatGPT for a number of times, every Yes, day almost. correct.
Gautam, how many of you were from this group of you? I think few people. Few means what? 20%, 30%, 50%? 20, not more than that. Not more than that. Okay. So, okay, fine. So, In 67, out of 67, I think 15, 17 people. 15, 17 I people, think. right? I think. Okay. Yeah. So people who are using it, for them also, there is some ये hack चैट that you जीपीटी can के use, नीचे which I want to talk about. हाँ बोलो. Yeah, Surajit, बोलो. Sorry, someone was saying something. बोलिए. Okay, we move ahead. So, if you're not logged in, then it's simple process. Go and download ChatGPT on your phone app or go to chatgpt.com and you can, through your Google login, you can log in. It's a very, very easy process. Just do that, right? Now, let's see few of the use cases of content creation for you, right? Now, say for example, and we will see, I will also log in right now. So, I'm an avid user of ChatGPT. So this is a window that opens. All of you can see my window. Yes. Yes. Now there are some section आपको जब खोलोगे ना तो ये हो सकता है आपका कोलैप्स रहे ऐसे आपको दिख जाए. What can I do? What can I help you with? Write anything, create a image, write or edit, look up something for. ये जो है जो भी आपको करना है आप यहाँ पे कर सकते हो, right? ये 3 आपको टैब दिख रहा है, right? Now आप जाते हो यहाँ पे say for example you expand करो यहाँ पे new chat का window आता है, right? Now sir, whenever you are starting. we cannot see your chat Yeah, we are Oh, unable to you see your cannot see. chat GPT One sec, window. one Kindly sec, share one that sec, window. one sec. Sorry. So let me just stop sharing and again once again share it. Huh? Sure. Can we see now? Yes, sir. It's visible. Okay. So now, so basically, let me repeat what I said. When you open this window, ये आपको ऐसा दिखेगा. Ask something, create a image, write or edit, look up for something. ये आपको 3-4 चीजें आप कर सकते हो, ठीक है? ये हम बाद में देखेंगे एक एक करके. नाउ आप यहाँ पे ये जो यहाँ पे क्लिक करोगे, सॉरी यहाँ पे क्लिक करोगे एक्सपेंड हो जाएगा जहाँ पे न्यू चैट है, सर्च चैट है, प्रोजेक्ट्स है, कोडेक्स है, मोर एंड ऑल ऑफ सब देयर, ठीक है? वी विल सी वन बाय वन. सो नाउ लेट्स गो टू न्यू चैट. सो व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक, एकदम फ्रेश आप चालू कर रहे हो सोचना, तो आप इसके साथ यहाँ पे जाके लिख सकते हो, ठीक है? आप यहाँ पे जो भी आपको प्रॉम्प्ट है, इसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं, यहाँ पे जो लिखेंगे इसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं. सो वो प्रॉम्प्ट आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे सकते हो. नाउ ये मशीन है, ऑगमेंटेड मशीन है. सो इमेजिन दैट आप जो लिख रहे हो और मैं जो लिख रहा हूँ ना, मान लीजिए दोनों का आंसर विल बी वेरी डिफरेंट, राइट? बिकॉज आई हैव बीन इंटरेक्टिंग विद द मशीन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आप अभी जस्ट चालू कर रहे हो तो आपका कोई हिस्ट्री नहीं है दैट द मशीन हैज लर्न फ्रॉम, ठीक है? सो और आपका इनपुट, आप जो प्रॉम्प्ट दे रहे हो ना, दैट इज गोइंग टू डिसाइड द आउटपुट ऑफ इट, ठीक है? सो अगर इनपुट स्मार्ट होगा तो स्मार्ट आंसर मिलेगा. इनपुट अगर अगर उतना स्मार्ट नहीं रहेगा, डंप इनपुट रहेगा तो डंप आंसर निकलेगा. सो देयरफॉर चैट जीपीटी का जो आउटपुट है, इट इज अ मशीन. व्हाट अगर इनपुट सही दे रहे हो तो आउटपुट सही आएगा. आवर जॉब टुडे इज टू फाइंड हाउ डू वी गिव द राइट इनपुट, और इफ देयर इज अ फॉर्मूला ऑफ गिविंग the input properly. So we want to learn that formula and learn some hacks. So people who are using it also can benefit from that formula of how to write better prompts to get better answer, right? So whenever you are writing a new prompt, start from this window, say ask something. Now you can say that suggest, I want to write an email to my client for, for say, for creating an SIP or something like that. So जैसे मैंने मेरे प्रेजेंटेशन में एक prompt use cases लिख के रखे हैं so that it saves us time. Say prompt for child education, proposal email to for Mr. ABC. So write a professionally yet friendly email. So you can write an email, I want to propose. So let's see, let's play around with this. Okay, say write an email. देखो मेरा जो आंसर आएगा ना और आपका जो आंसर है गलत आएगा, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग विद दिस चैट जीपीटी फॉर द लास्ट 1 year. सो देयर इज लॉट ऑफ लर्निंग. तो मैं अगर ऐसे भी बताऊंगा समझ में आ जाएगा
सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का ही बात कर रहा है, आप ऐसा भी बताओगे तो हो सकता है कुछ और सोचे, ठीक है, राइट। आप मैं एसटीपी बताऊंगा तो ये समझ जाएगा कि ये सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान का बात कर रहा है, ना कि कोई ट्रांसमिटेड डिजीज का बात कर रहा है, ठीक है। So the point is that the more you interact with this machine, the more easily it is going to learn. So let me take this prompt for you. Okay, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। नाउ यहाँ पे क्या होता है, ये जो अब मैंने लिखा ना, यहाँ लिखने में आप लोग जो लिखोगे ना, इसमें थोड़ा फर्क रहता है, आई हैव सीन दैट। आप से मिस्टर विवेक के लिए, ठीक है, मिस्टर विवेक, आई राइट अ प्रोफेशनली येट फ्रेंडली email to Mr. Vivek introducing a child education plan through mutual fund. The tone should be अभी this ये जो tone should be helpful, informative, and the email should highlight the importance of planning early for child's education. इतना आप लोग लिखते नहीं हो। The point is that this is very difficult. People do not write so much, and it is important to write this. And I will tell you in a bit why it is important. And I am not starting it from the extremely scratch basic system नहीं चालू कर रहा हूँ, क्योंकि usually what you write an email for Mr. Vivek. I want to propose him an SIP plan for his child education. इतना मैक्स अब लिख दो, इससे ज्यादा नहीं लिखो। Usually people do not write it, but if you write, इसमें देखो professionally yet friendly. You want to sound professional. Why do you want to sound professional in your email? Because no one wants to park their money with unprofessional guys. आप बैंक में जाओगे, आप भले ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का जितना भी दिवाला निकल गया हो, आप देखोगे कि उसका ऑफिस, उसका स्टाफ एकदम चमचमाती हुई और स्पिक एंड स्पैन, सब एकदम वेल ड्रेस्ड है, सब सही से बात कर रहा है, ऑफिस एकदम चकाचक है। बिकॉज अगर वो ऑफिस ही उसका एकदम दिवाला निकल गया है, तो कौन उसको पैसा देगा? So therefore, every individual wants to interact and place their money with professionals, with expert who, और वो अगर खुद अपने लिए पैसा नहीं बनाया तो मेरे लिए क्या पैसा बना के देगा? These are very very hard hitting words. Please do not take it in ideal sense, but these are the fact. These are the fact. To the extent, right? There was a CEO who went of a pharma company went to raise money और कुछ हेल्थ प्रोडक्ट लेके आया था। तो वन ऑफ द इन हिज मीटिंग एक इन्वेस्टर ने उससे पूछा, भाई तुम अपना हेल्थ का तो केयर नहीं रख पा रहे हो, तो मेरे से पैसा मांग रहे हो, उसका क्या केयर करोगे, राइट? सो देयरफॉर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लुक प्रोफेशनल yet friendly and all. So write a professional yet friendly email for Mr. Vivek introducing a children education investment plan for, say, for for Sumit is the child, for Sumit, who is the child child through mutual fund. Now I have given the name of the child also, किस tone में चाहिए वो देना है. So the tone should be helpful and informative. I have not explained him, say for example कितना कैसे पे करना चाहिए. से सुमित 5 year old या 10 year old कर देते हैं, सुमित 5 year old, ठीक है, 5 year old. देखो मैं धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन बढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है, एंड लेट मी सी व्हाट इट गिव्स. ठीक है, सो इट गिव्स, हाउ आर यू नहीं लिखना है, ठीक है। मैं आपको कुछ हैक सिखाऊंगा कि कैसे आप जो लिख रहे हो ना, हाउ कैन यू राइट इन अ मैनर दैट डजंट लुक लाइक इट हैज बीन रिटन बाय अ मशीन, ठीक है। वो सब हैक हम थोड़ा धीरे बाद में आएंगे, पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं. आई वांट टू कनेक्ट रिगार्डिंग एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन ऑफ पेरेंट्स जर्नी प्लानिंग फॉर ए 5 year old सुमित, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, इसमें आ गया. नाउ दिस इज वेरी वेरी बेसिक कि व्हाट इज द कॉर्पस दैट सुमित कैन एक्सपेक्ट, ठीक है. Now say what is the, मैं एक additional दे रहा हूँ, this is not a complete information, ठीक है, it's a very generic information. Education have been cost have been rising and all. अच्छा, how much corpus can Sumit build at 18? With say 10,000 is with 10,000 per month, ठीक है, let's see. Now एक additional information दे दिए which you wanted to be included in the in the email itself, ठीक है, अगर आपको कुछ calculation इसमें चाहिए. So, interrupting you once, Yeah. since you added it as an additional prompt, can we edit the initial prompt and add this information? It will be now I'm coming to that only. Okay. Right. Very very good question. Now देखो ये क्या कर रहा है, if Sumit is 5 year old and you invest 10,000 per month until 18. Now 18 में ग्रेजुएशन हो जाता तो contextually ये relevant ले लिया कि 18 में ग्रेजुएशन हो जाएगा, ठीक है, या मैंने भी दे दिया, नहीं भी देता तो शायद ये ले लेता 18 में. सो द पीरियड इज 13 years. तो 10% में ग्रो करेगा तो 32 लाख, 12% में ग्रो करेगा तो
12% में ग्रो करेगा तो दिस विल बी 37 लाख, 15 में ग्रो करेगा तो 48 लाख, ठीक है। नाउ टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, इन्वेस्टमेंट 15 लाख हुआ, ठीक है। सो नाउ इट इज ऑल्सो इक्विप टू डू फ्यूचर वैल्यू ऑफ एसआईपी, ठीक है। सो आपको अगर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एसआईपी जो पहले हम लोग व्हील बना के देते थे, ऑल दोस थिंग्स इफ यू वांट टू क्विकली यू कैन डू इट इन अ चाइल्ड। क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो, फटाफट आपको एक फ्यूचर कैलकुलेटर बनाना है, आप इसमें से ही लिख के दे सकते हो कि इतना इतना प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू कितना बना एसआईपी का 12% के हिसाब से जो भी है। सो इट्स नॉट दैट यू हैव टू लर्न ऑल दोस कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस, ठीक है। बट नाउ आई वांट टू इंक्लूड, अभी इनका जो सवाल था, प्लीज नॉट बाय प्लीज, क्लब दिस, क्लब दिस in the email and rewrite and rewrite and rewrite, make it uh, make it short and sharp, uh, और जस्ट ठीक है छोड़ दो ये मत दो। let's see and rewrite, make the flow appropriate, appropriate and interesting. Okay, say whatever, to put in perspective, investment of 10,000 rupees per month started for Sumit and continued till 18 years. Over the period of 13 years, investment would be 15.6 lakhs. Assuming the long term growth of mutual fund, this has the potential to build your purpose to 35 to 38 lakhs, by the time he reaches his higher education. ठीक है, it has clubbed that information. Now आप ये 2 बार 3 बार करोगे ना, ये अपने आप ले लेगा. Next time when you ask for this information, it will, or an SIP email, it will कैलकुलेट दिस अमाउंट, बिकॉज आपने 2-3 बार मांगा है, तो याद रखेगा कि ये इसको रिप्लाई जो है विद द कैलकुलेशन चाहिए होगा. इट विल राइट दिस. नाउ यू कैन मेक इट शॉर्ट. नाउ व्हाट इट सेज इज दैट, ठीक है, फाइन. सो एनी क्वेश्चंस ओवर हियर? आई विल जस्ट टेक अ पॉज. I believe none as of now. You can continue. Now say for example, okay fine, let's go to the next one, okay. Now what I'm saying, that draft an email for ABC to highlight the emotion of financial benefit of starting early for his children. ठीक है, छोड़ दीजिए, इसमें आप combine the emotion appeal, securing child's dream with logic, cost, inflation, discipline, SIP, and keep the perspective not too pushy. You don't want to push him for the SIP, but leave with a ड्रीम की, लाइक क्या बेनिफिट रहेगा, क्या रहेगा, ऐसा करके इमोशनल भी प्रॉम्प्ट दे सकते हो, ठीक है. इट विल चेंज द आंसर कंप्लीटली व्हाट यू हैव सीन. ना ठीक है, दिस ये तो हो गया ईमेल के लिए. ना आप लोगों से कितना कितना लोग से गुड मॉर्निंग मैसेज भेज दो अपने लोगों को, क्लाइंट्स को. मोस्ट ऑफ यू मे बी सेंडिंग, few of you have broadcast, you want to connect with them. Now how do you make that contextual, and again how do you make it long termism, how do you make something very different, right? So let me show you one new chat prompt. Now I want to, एंड आई विल ऑल कंबाइन, ये जो मैं रैंडमली आपको दिखा रहा हूँ ना, ईमेल कैसे लिखना होता है, ये कैसे भेजना होता है, ये कैसे करेंगे, ये मैं थोड़ा टाइम पे ना एक कंबाइन करके आपको बताऊंगा कि आप इसको यूज कैसे कैसे कर सकते हो. आई वांट टू सेंड गुड मॉर्निंग मैसेज टू माय क्लाइंट्स in a poem format highlighting benefits of SIP. Poem should be not more than 6 lines. 6 lines. ठीक है, राइट. Good morning. A small SIP today, a habit wise and bright. Turns little step into goals, taking flight. Wait, time and discipline, working side by side. Compounding grows your wealth like an ocean tide. Start small, stay steady, and enjoy the ride. Right. So basically, now convert this.
গৌতম দা পড়তে হবে তোমাকে এটা। হুম, আনমিউট করে পড়ো। শুভ সকাল। আজকের ছোট এসআইপি হতে পারে আগামী দিনের ভরসা। ছোট ছোট পদক্ষেপই গড়ে ওঠে স্বপ্নের আশা। সময় আর নিয়মিত বিনিয়োগ চলুক হাত ধরাধরি করে। চক্রবৃদ্ধির জাদু সম্পদ বাড়াবে ধীরে ধীরে। আজ শুরু করুন ছোট করে, ভবিষ্যৎ হাসবে। সরি, এখানটা হাসবে ভোরে। এ তো ইয়ে কবিতা হয়ে গেল তো পুরো। ঠিক আছে। সো রাদার দেন সেন্ডিং আ গুড মর্নিং মেসেজ, তুমি যদি কবিতার ফর্মে পাঠাও ওকে, একটু ডিফারেন্ট হলো। হুম। ঠিক আছে, ইউ ক্যান রাইট ইন রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজ অলসো, হিন্দিতেও লিখতে পারো। পিপল হু আর ইন হিন্দি দে ক্যান রাইট ইন হিন্দি, পিপল হু আর বেঙ্গলি ক্যান রাইট ইন বেঙ্গলি, ইউ ক্যান কনভার্ট দিস টু। And the best part is that if you want to write importance of SIP, importance of SIP in a poem format like that of, ঠিক আছে, টেগরের ফর্ম্যাটে তুমি একটা পোয়েম লিখতে চাইছো, ঠিক আছে, don't worry, when you write, no, this spelling mistakes and all these are all very contextual. The machine is good enough to understand what you're trying to say. ঠিক আছে, ইম্পর্টেন্স স্পেলিং ভুল আছে, পোয়েমে স্পেলিং এ আন্ডারলাইন করা আছে, ঠিক আছে, তোমার রবীন্দ্রনাথ টেগোর আছে, দিস উইল অল দে উইল আন্ডারস্ট্যান্ড। সো ইউ ডোন্ট, দেখো আমরা লিখি না কেন, why don't we write, we are, we do not write because we are fearful of writing good English. We are fearful of whether there will be grammatical mistake or not. That is the fear of writing what stops us from writing and communicating to our clients. Now, that হুম। fear you can throw out of the window, because if you can express that what you want to do, the machine will do it for you. Right? It has written a বাহ। poem in the style of Rabindranath Tagore, which is very distinctive. And Gautam, আমি পড়ো পড়ে এটা। শোনাই। আমি হ্যাঁ, পড়ে শোনাই। বলো। শুভ সকাল। সময় নদীর স্রোতে দিন যায় ভেসে দূরে, ভেসে দূর। আজকের ছোট সঞ্চয়ের জাগে আগামীর সুর। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিতে যেমন ভরে ওঠে সাগর, তেমনি ছোট এসআইপি গড়ে তোলে স্বপ্নের ঘর। নিয়মের পথে চললে ভবিষ্যৎ হয় আরো সুন্দর। Right? So দারুণ every দারুণ। time you are pitching, দেখো, হুম হুম what is happening, what we are communicating the same stuff. It is extremely boring, right, for you to send out the importance of SIP and all of that to the client. Now, but we have to communicate that, because the basic principles of investing and the behavior that we want our clients to demonstrate, which is long termism, which is not stopping their SIP, which is not like continuing with the stuff and all. How do you tell the same stuff in little different distinctive style, so that he also feels little good about it? Ekটু পড়বে, like he is going to read and take time, because today there's a plethora of information. How do you place that information is equally important. It has to be interesting, it has to be little differentiated, okay, then people will grab attention, right? uh Sorry, any question, Devashish da, any question? Okay, okay, we'll move ahead. Right. So you have seen that you can now write a email, you can write a poem also. Now, say for example, I am writing now, write an article. Okay, people are stopping SIP. Okay, due to market volatility. Okay, due to market volatility. I want to write an article of 600 words in a hard hitting manner that why one should know some preference. Let's see what it gives. Okay. Practical problem, people are stopping SIP due to market volatility. I want to write an article of 600 word in a hard hitting manner that saying why one should not do it. Give some reference from the past. So, see, I also do not know what the answer it's going to give. Okay. Now, and then we will see this, and then we will combine it and move on to some other stuff that you are doing.
Okay, stopping SIP during market volatility. Are you quitting? Are you quitting? Exactly why SIP? Exactly when SIP starts working. Okay, so it has written an article of why you should not do it. See, I have said that give some reference from the past. So let's read this. It will be interesting. Today, many investors are pausing or stopping SIPs because markets are volatile. Recent industry data shows SIP stoppers have risen sharply, even crossing new registration in some period. So last month তুমি দেখবে যে last month না SIP registration যতগুলো হয়েছিল I think 32 SIP ইনফ্লোস ছিল 32,000 crores এর আর SIP স্টপেজ ছিল বোধহয় একটু বেশি এর থেকে ঠিক আছে so it has taken reference from that ঠিক আছে so 1 second এটা দেখো এখানে সোর্সও দিয়ে দিয়েছে কোত্থেকে দিয়েছে দেখো মিউচুয়াল ফান্ড এসআইপি স্টপেজ রেশিও কন্টিনিউস অ্যাবাভ 100% ইভেন অ্যাজ ইনভেস্টর কন্ট্রিবিউটস 31,115 crore so ইকোনমিক আর্টিকেল ছিল মে 12 2026 না you may not have read that article ঠিক আছে but because this is a problem that we're facing it has sourced it from an authentic place that you can rely on and can write this now you can say with a lot of confidence that ये जो information दिया सही दिया because you can there's a reference for it ठीक है today reason same period but before clicking the stop SIP button ask yourself one question if discount excites you while buying clothes cars or phones why do falling prices scares you while buying wealth so what you are doing is that you are buying units. So when there is a sale discount, चौत्र मासे sale आसे year end sale होता है. So you all love that and you go and buy and shop at that point in time. But when there is a discount while buying wealth, why you are scared of? Right? It is asking a question. Markets have never moved in a straight line. Never. In 2008, during the global crisis, the Sensex crashed around 21,000 points to nearly 9,000. Portfolios were bleeding. Headlines screamed fear investors excited exited in panic then recovery March 2020 covid brought another shock the market fell by around 35% 2008 এ তোমার financial crisis ছিল 2020 তে global crisis covid এসেছিল the market fell by 35% again people questioned equities again they wanted to stop SIP and then recovery in 2022 inflation fears the Russian Ukraine war conflicts and all this have happened okay so history keeps changing the event but not the behavior the story is always the same. Market fall, fear rise, people stop SIP, market recovers, people restart SIP. The only problem, they restart after prices are moved, gone by. Stopping SIP is often not buying. Buying is often nothing but buying expensive and refusing to buy cheap. Think of SIP as a monthly shopping tip for wealth. During the market decline, your 10,000 rupees buy more unit. When market recovers, those units accumulate. Those accumulated units become powerful wealth creator. This is the very mechanism SIP was designed for, buying more units when market fall and whatever. Yet investors do the same opposite. They continue SIPs even when everyone is celebrating the stop and when markets are offering opportunities. This is nothing but emotional decision, blah, 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 blah. Good article. You can write this and put it on your website. You can send it to your clients. You can send it, publish it on LinkedIn and all. Today, why most of us are not doing that, are not present on those platforms is that how do I write? Where do I source information from? Who will validate my writing? There is no editor for me, right? कि मेरा इंग्लिश सही है और कि नहीं हो रहा है मेरा फ्लो सही है कि नहीं है मेरा जो दिक्कत है वो मैं सही से लिख करके प्रेजेंट कर पाऊंगा कि नहीं सामने वाला हंसेगा तो नहीं right those are the fears which stops us from writing and all but that fear is now removed with chat gpt if you have the problem if you write it over there now ये आपको बड़ा लग रहा है मैंने यहाँ पे देखो एक ना prompt में if you see the prompt में लिखा था write the article in 600 words I could have written this ये मुझे थोड़ा लेंदी लग रहा है अभी तो मैं इसको लिख सकता हूँ rewrite this within 500 words so ये 500 वर्ड में कर देगा छोटा कर देगा आपको और थोड़ा छोटा चाहिए और छोटा कर दीजिए आपको चाहिए कि like I want this in a story format right so write this write this in a story format where two friends are talking about their SIPs and one of them want to stop it ठीक है they are in their morning walk so ठीक है तो सेम स्टाफ दो फ्रेंड दो बंदे मॉर्निंग वॉक में जाता है एक जन बोल रहा है कि मैं अपने एसआईपी बंद करना चाहता हूँ मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है थक गया हूँ ठीक है
So दूसरा वाला friend advice दे रहा है. Now how that conversation will go? It will give you a good write up and all. I am not. Let's just see the answer. So it has also taken Ramesh and Suresh. Had been morning walk partners for the last 10 years. Every day at 6:30 p.m. they meet and all. It now converted to story format. Okay. Then that morning, however, Ramesh looked unusually quiet. Suresh noticed what happened. You look more worried than India in the last over of T20 match. Ramesh smiled weakly. I think I am stopping my SIP. Suresh, slow down. Why? Stopping your SIP? Why? Markets are falling and all. And blah, blah, blah. The same story. Now it is in a two-friend conversion format. Now, see, you have written a poem. All of a sudden, you have become a poem. All of a sudden, you have become an editor of a newspaper who can write an article of 300 words. All of your friend, if you want, you can put out a magazine where two friends in a story format you are writing. So suddenly, you are so rich in making content. Now I can convert this into a carousel also. I can convert this into a Insta post image format also. The same stuff I want to communicate in image format. So it will make an image for me, which I can post it on Instagram, which I can post it on which I can post it on say LinkedIn. ये LinkedIn का article भी बन गया. इसके साथ एक image कैसे जाएगा? Now suggest an appropriate. I want to post this. Say for example, I want to post this on LinkedIn. ठीक है? Along with the image. Suggest an image. Okay, now you do not need a designer. Now you do not need an agency to work for this. It has given you options also, right? Options also. 6 options दी आपको इन्होंने. ठीक Sir, है. excuse me, are you using the paid version of the ChatGPT or the free version? Free version. These are all free. Paid version तो अभी Thank you तुम्हें very देखा much. है. There are a lot of other stuff that you can do. Okay. So now your LinkedIn post is ready, image is ready. You have a website. You want to put an article. वो article दे दिया अपने LinkedIn में post कर दिया, social group में post कर दिया, और ये image के साथ and the link to the article. People will go and read that article. So without spending any money, in the last 20 minutes, we have written a poem that I can send it out to my clients on the broadcast. Yeah, I can write an article on LinkedIn and post it and can do this, that, and a lot of other stuff. Even if you want, you can start your own newsletter. सॉरी टू स्टॉप यू. Yeah. मुझे एक क्वेश्चन पूछना था. ये जो इमेज, ये हम्म. इमेज अगर मैंने पोस्ट कर दिया, हम्म. मान लीजिए ये इमेज जिनका है उन्होंने देख लिया फिर क्लेम कर दिया, तो उसके लिए क्या हो नहीं सकता है? करेगा because okay, very valid question and very important question. These are all AI generated image. तो AI generated image में कोई ऐसा शॉपर स्टॉक से वो नहीं ले रहा है. AI generated image है. All you should do is that, okay, let me show you something. Valid question. So let me go to ChatGPT once again. आ गया मेरा ChatGPT विंडो. भाई हो गया. वन सेकेंड. ChatGPT विंडो कहाँ चला गया? हाँ यही है ना. ओके. I want to end the article with a disclaimer with the investment disclaimer, and image is generated to so आप जब article लिख रहे हो ना, as a financial advisor, it's very important for you to end with a disclaimer. Now, this article is for education, informative purpose only, and should not be considered as investment advice or recommendation to buy, sell, or continue any investment product. Mutual fund investment subject to market risk. Please read all the offer-related document and consult your financial advisor before making an investment decision. Image disclaimer: the accompanying image is generated using AI for lesson purpose only. It is intended solely to support the narrative and not
represent real individual events or situation. Period. आप खत्म हो गया अपनी तरफ से. Clear? Thank you. Right. So Rajita, that is what you need to do. So every article that you're writing, write it with a note. See why I am showing you all of this. It's very important that you need to establish. I said that if we all want to be professional and people trust their money with professionals. Now, when I say professional, you have to, your look should be professional, your writing should be professional, your website should be professional, the way you're talking should be professional, right? So you can be friend, but when you're talking about money, okay, when you're talking about money, you cannot be casual. That's your profession, right? So there you have to look, you have to have disclaimers, you have to have present yourself very properly. Number one. Number two, now professionals do not end up blabbering about money to everyone. Okay, a doctor never goes and tell his patient, sees a sick patient, but will not give him advice on its own until unless the person comes for advice. Okay, so we have to, if you want to demand respect and all, you have to work that path also, but create opportunities where your clients come to you. Okay, how do you do that? That you will see. We cannot cover everything in one day, but you can do a session on that also. That how do I go and open money discussions and let people come to me rather than me going to them? How can I create that pull factor for myself? That's a different topic. You can do that one of this. Okay. So basically, so far, are you clear now? Now, see, if you combine everything, there is no problem. If you spend 1 hour, then you can create a newsletter for yourself. That is the content bit you can create for yourself, and you will see designing how you can design it also. Okay, there are AI tools that will help you to design the newsletter and give you in a newsletter format. Okay, this is done. Let's go. I don't want to spend anything now. Another use case. Let me show you. Say you are going and meeting a very important client. Okay, you are meeting. I have a meeting with. I have a meeting with the CEO of which company? Of Suleka Pens. ठीक है? और से Excite का CFO से मिल रहा. CFO of Excite Battery. ठीक है? And pitch him for arbitrage fund. Suggest how the conversation will go. Prepare me মিউট and do করো a role play. ঠিক আছে? Okay. Now again, very interesting. What I'm saying is that you have a very important client meeting. Whether it client could be a teacher, a IPS officer, or a builder, or a CFO, or whoever is that. Now you are meeting a big client for the first time. You are you are meeting him. You do not know. You want that how that conversation will go. What are the probable question he's going to ask? If you can do a role play. Now these are important to prepare yourself. But आप किसके साथ करोगे? ठीक है, today you do not know. Can you bounce off to ChatGPT and say that help me? तो একটা स्टीरियोटाइप एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा कि वो क्या सवाल पूछेगा, आपका जवाब क्या होना चाहिए, और हो सकता है ऐसा कन्वर्सेशन जाए नहीं, बट एटलीस्ट यू आर वेल प्रिपेयर्ड. नाउ देखो क्या बोल रहा है. Thank you for your time. Before I discuss any solution, I want to understand how currently you're managing. चलो ठीक है, you are meeting the CFO, so that the conversation is unlikely to begin. Tell me about returns. A CFO generally thinks in terms of treasury efficient, liquidity, cash flow, visibility, tax efficient, risk control, and governance. These are the way the CFO will think. Okay. So you have to prepare your talk according to his thinking. Now, if you're going to a teacher, how he thinks. If you're going to a IPS officer, how will he think? Right? Everyone is thinking because we are all from a certain profession. Because of being in that profession, we have some biasness already been created. Now, how do you play on those biasness and position your product is important. Okay. Now, say why I'm saying this. Now, a teacher, you know, day in, day out, he's talking to his students about discipline. You have to be disciplined, you have to be focused to get good marks and all. अगर वो उसका belief system में ऐसा बैठा हुआ है कि discipline and focus, can you bring those words in your conversation? Because
ये बोलेगा अच्छा ये तो ये मेरे वाले बात करता है, मैं डिसिप्लिन की बात करूँ तो ये भी डिसिप्लिन का बात कर रहा है, मैं फोकस की बात करूँ ये भी फोकस का बात कर रहा है. सो द अलाइनमेंट एंड द ट्रस्ट building will happen much faster. So you need to know how the person is thinking, or how that professional guys will think, if one is from that profession. So here you are going for a arbitrage fund. That is what I am saying. You're going to pitch an arbitrage fund. So CFO generally thinks in terms of treasury efficient, cash flow management, tax efficiency, and all of that. Since you mentioned Excite Battery, I assume that the corporate treasury surplus funds are there, and that is what you want to pitch arbitrage fund. It has made that assumption also. It understand that, like, I gave this example of Excite because you guys are from East, right? And this is a company that is headquartered in East. Thank you for your time. Before I discuss the solution, I want to understand how you are currently managing your treasury. So you have to ask that, because that is this challenge problem. And then what the CFO will say, what he will say, it varies, sometimes 2 to 3 months longer. Now the conversation, it is building a conversation role play, that what the CFO might ask and what your answer will be. Right. So it has done a role play. So any new client you're going and meeting, you can do a role play quickly, 5 minutes on the way. If you are going to meet him, or in the car itself, or in your transit, you can quickly do a role play, and you can see what the machine is saying you. So therefore, you can prep yourself before the meeting goes. Sounds good? Any confusion? Should we move ahead? কি প্রম্পটটা লিখলেন এখানে প্রম্পট আমি লিখলাম যে I am meeting the CFO of Excite Battery, and দেখো পিচ লিখেছি, পিচ হওয়া উচিত ছিল, and want to pitch him for arbitrage fund. Suggest how the conversation will go. Prepare me for a role play. থ্যাংক ইউ ঠিক আছে? So now it is clear. You have seen how the flow and everything is happening, right? So we have seen few use cases. Now let me tell you how to use ChatGPT effectively. Is there a formula of writing a prompt, right? Now, rule number one, that your prompt, if it is very minimal, then the result quality will be very poor. So you have to write the prompt and explain it, right? Now imagine, okay, let me take a pause over here and again go to Chat GPT and tell you something very important. I should have told that to you. Okay, that is one. One second. Now when you are writing a same thread, now you can, this is like a co-pilot. You are writing a chat, now this doesn't like you, suit you, so you can change, make edits in this. But if you are writing a new chat, altogether new subject, then always go to a new chat. Don't follow the same thread, and your last chat will come over here, recent chats mein. Now stopping SIP during here, I want to, like, you can convert this into a Twitter post. Now say convert this into a 6 point tweet thread. Therefore, we wrote an article, we wrote a poem, we wrote a SIP should not stop. Now I am converting into a Twitter post. Okay. So it is saying a Twitter post, 6 posts it has created. I've asked for six posts, and it has created Twitter post. So now you can make yourself present in Twitter also. So, but this is the same thread. I have not changed the thread, because the line of thinking is the same, hence the same continuity with the same thread. If the line is different and it's something very, very new, then you go to and start a new chat. Clear? And all your recent chat, all your recent stuff that you have seen is stored in this recent. You can go and search this also. Search button may you can go and search your 1 month old something that you have looked for, and you can start building the thread on that also. Okay. Okay. Yes. So now coming to, now if don't write, tell me something about SWP without context, it will not work well. Okay. Instead, write that I want to propose a systematic withdrawal plan as a regular income solution for a couple who is retiring in few years. Help me write a client proposal that can convince them to invest lump sum now in a professional yet empathetic tone within 500 words. So what you are seeing is that, see, what you need to write, is there a formula for it? Now this is very important, that whatever you want, you have to mention that client requirement, what is that your requirement is. Now here you are writing I intend to propose. Now if you intend to
propose, then don't expect an email. If you want an email, then write, I want an email. So be very, very clear on what your expectation is. वो clarity आपको रखना पड़ेगा. So whatever is your requirement, you have to write that. In what tone you are writing? You are writing as a financial advisor or a financial expert. So write that I want to. You want to write in a manner that this reflects that I am an expert, or write in a professional tone. Write in a as if it is coming from an expert. The reader's persona, who is reading it, what is his persona is. Now here you have written a couple who is retiring in few years, so the machine understands the retiring is, that means he must be in his 58 60s. Okay, that's the age of retirement. What is the length of the response it would be, and any other constraint you want to put a disclaimer, then write plus, add a disclaimer also. So this is very important, that whenever you're writing a prompt, if these things are mentioned, you will get a very good reply. Otherwise you have to do iteration 2 or 3 times and you will get it. So what is the requirement that you have? What is the tonality at with which tone you are writing this email? What is the persona of the reader? What is the desired length of the response? Any other constraint, like you want to add a disclaimer, you want to do something, that you want to write. Is this clear? I want to take a pause over here. Hello. Yes, carry on, carry on. Carry on, right? So this is very important. Content requirement, writer's tone, reader's persona, desired length of response, or any other response. Okay, this is now. Lot of the times, these are few hacks that you can use, and this is very important. Now, many a times, you may feel that यार ये machine लिख रहा है ना, ये थोड़ा मैं तो ऐसा लिख नहीं सकता हूँ, ये सामने वालों को समझ में आ जाएगा, ये मैं चैट जीपीटी यूज किया हूँ, ये सब शंका भी आजकल लोगों के मन में आ जाता है. ठीक है, तो इसको कैसे हम ये कर सकते हैं, या ये जो मैंने मेल लिखा है ये CAGR है, ये तो मेरा क्लाइंट को समझ में नहीं आएगा, ये इंटरेस्ट रेट्स, ये यील्ड समझ में नहीं आता है, हाउ डू आई मेक इट jargon फ्री, ये सब भी रहता है, राइट? नाउ therefore it is few hacks that you can use to make it interesting. Like one is, आपने जो prompt दिया ना, उसके बाजू में अगर लिख तो ELI5 और ELI10, ठीक है, मतलब जो prompt मैंने लिखा है चैट जीपीटी में, उसके बाजू में मैंने लिख दिया दे, ये वाला मैं ना सॉरी, ये वाला मैं अगर मैं लिखता हूँ रीराइट ELI10, बस इतना ही, ELI10, ठीक है, इतना मैं लिख दिया ना, तो ये ELI10 का मतलब क्या है? एक्सप्लेन इट लाइक आई एम ए 5 year और 10 year old. तो EL5 लिखोगे तो 5 year, 10 मतलब 10 year. तो हम लोग बोलते हैं ना जार्गन फ्री करना है, तो जार्गन फ्री आप कैसे कर सकते हो? आपका प्रॉम्प्ट लिखा, उसके बाद आपने, और मान लीजिए इसमें ना और एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे अटैच है. अभी मान लो अटैच मतलब यू कैन अटैच अ फाइल. सो आपको एक फंड हाउस ने एक मार्केट आउटलुक भेजा है जिसमें फुल ऑफ जार्गन्स एंड ऑल ऑफ दैट, सो यू कैन अटैच दैट file, create and tell ChatGPT that can write a summary of this, and then plus ELI10, मतलब इसको समराइज करो और मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड सो दैट 10 year old कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, तो ये है एक हैक. तो वो क्या करेगा, वो PDF को पढ़ेगा, उसको समरी बनाएगा और उसको इजी बना देगा कि 10 साल का बच्चे को समझ में आ जाए. क्लियर? सो ऐसा फ्यू हैक और बनाते हैं. आप अगर /ELI10 एक हो गया, फिर अगर /human कर दोगे तो मेक इट साउंड लाइक ए ह्यूमन लेस रोबोटिक, क्योंकि ये जो है ना ये रोबोट लिख रहा है, तो रोबोट में आपको ह्यूमन टच नहीं आता है, तो अगर /human कर दोगे तो वो ह्यूमनाइज कर देगा. ठीक है, TL और DR अगर लिखोगे तो उसे शॉर्ट बना देगा. ये लंबा आंसर बहुत लंबा लग रहा है, चिट्ठी बहुत लंबा लिखे हो, इसको TL DR कर दो तो शॉर्ट कर देगा. 1 line समरी, अभी इतना बड़ा नोट है, इसका 1 line समरी लिखोगे, तो ये जो हैक यूज करके आप बना सकते हो. एग्जाम्पल्स ओनली, आपने एक आर्टिकल डाल दिया, बोलोगे एग्जाम्पल्स ओनली, इसको मेरे को एग्जाम्पल के तरीके से समझाओ, ये मेरे को समझ में नहीं आया. कंपेयर X एंड Y, तो ये जो है ना ये म्यूचुअल फंड FD वर्सेस इन्वेस्टमेंट, इसको कंपेयर X एंड Y, अंडरस्टैंड थ्रू कंपैरिजन, इंडेक्स वर्सेस फ्लेक्सी फंड, लाइक टी वर्सेस कॉफी. टी वर्सेस कॉफी का स्वाद जैसा आता है ना, वैसे कंपेयर करके बताओ मेरे को, ये दोनों इतना इजी बन के. प्रॉस कॉन वर्डिक्ट देखो तो आपको वो दे देगा, फास्ट डिसीजन मेकिंग फॉर्मेट दे देगा. मेक इट ट्वीट रेडी, तो ट्विटर में कन्वर्ट कर देगा. मेक इट लिंक्डइन रेडी, तो लिंक्डइन पोस्ट बना देगा.
शो मी एज अ स्टोरी, तो एक स्टोरी फॉर्मेट दे देगा। तो इफ यू हैक जो भी है आपको, वो आप यूज कर सकते हो आपका रेगुलर यूज के लिए। ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द कोटा बाजलो 11:19 সময় চলে এসেছে। তো আজকে আমরা বাস আজকে এটা ফার্স্ট ভার্সন করে উইল এন্ড ইট ইন দ্য নেক্সট 10 মিনিটস এন্ড টেক আপ এনি কোশ্চেন দ্যাট ইউ মে হ্যাভ। সো আমি সুদীপ দুটো ভিডিও দেখাবো এর উপরে। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি দেখাবে না আমি দেখাবো? আমি দেখাবো, আমার কাছে আছে। আমি যেটা এখন ইউএসএ কিভাবে বিজনেসটা হচ্ছে এআই দিয়ে, আচ্ছা ঠিক আছে, আর আচ্ছা ঠিক আছে। আমাদের এই চ্যাট জিপিটি কিভাবে ফিনটেক কোম্পানিগুলো চলে যাবে খুব শিগগিরই। হ্যাঁ, আমি একটা কথা বলি না, এটা চ্যাট জিপিটি হচ্ছে लेवल 1। হুম। ठीक है, তোমাকে আমি এই যে আমরা प्रॉम्प्ट को लिखी ना, जो प्रॉम्प्ट हम लोग लिख रहे हैं, वो प्रॉम्प्ट को हम लोग एक टाइम लिख दें और बार बार मैं सवाल पूछूं ना, सेम आंसर सेम टाइप ऑफ आंसर देना चाहिए, वो भी कर सकते हैं, वो जेमिनी में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कभी जेमिनी करेंगे, एक सेशन में हम लोग प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं एक क्लिक में वो करेंगे। एक सेशन में हम लोग हो सकता है कि अपना वेबसाइट कैसे बनाएं आप, एक लाइन में वेबसाइट बना सकते हैं क्या? 15 सेकंड में आपका वेबसाइट बन जाएगा, आपका फोटो के साथ, आपका इसके साथ सब कुछ, लीड भी कैप्चर कर सकते हो, होस्ट भी कर सकते हो, ये सब कर सकते हो आप। तो बस हम एंड करेंगे अभी थोड़ा ह्यूमर के साथ। ये एक कॉन्वर्सेशन है, ठीक है? आप पहले ये जो मैं बोल रहा हूँ उसमें ध्यान दीजिए, स्क्रीन में ध्यान मत दीजिए। कहाँ पे चैट जीपीटी यूज नहीं करता, कहाँ गलती करता है। सो एक कन्वर्सेशन है बिटवीन ए इंटर्न एंड ए कंपनी का जो मैनेजर है उसके साथ इंटर्न है। एक नया इंटर्न बंदा आया है, वो लिखता है नहीं है फिन एडुकेशन यू नो स्टार्टअप है, वो बता रहा है कि my idea and critical thinking। तो সুদীপ দা उसका আপনার बॉस का সাউন্ড আসছে না। সাউন্ড কেটে যাচ্ছে। ইন- সুদীপ, ইয়োর কিছু শোনা যাচ্ছে না, हाँ जी, কিছু সাউন্ড শোনা সাউন্ড সুদীপ দা শুনতে साउंड পাইনি सुना কিছু। যাচ্ছে না? Okay, 1 second, let me put my camera off for a second। can you hear me now? ইয়েস Better? ইয়েস, হ্যাঁ ঠিক আছে, বেটার বেটার। Okay, হ্যাঁ ঠিক আছে। better na? So again I'm reading my idea is to aim and leverage the power of technology to enhance the learning environment and foster a more interactive, engaging educational setting. Through the combination of cutting edge hardware and software solution, we can transform the traditional classroom into dynamic immersive spaces that inspires curiosity, collaboration, critical thinking. Now what it is saying is that the intern is proposing something to his manager using chat, and he has written this using chat gpt. The manager is saying that have you written this with chat gpt? The intern is saying yes, I framed properly with it. Manager say okay, now tell me in simple words what your idea is without using chat gpt. Because see, we Indians have got such fascination to write flowery polished English, at times the actual meaning is lost. So be very very careful when you're using chat gpt or any of the tools. Your idea should be clear enough for the other to understand. So don't make it very complicated, because this machine can write in Rabindranath Tagore style, it can write in Shashi Tharoor style, you can write it in Churchill style also, right? Because this is trained on, or anyone who has got write up on the internet, you can replicate his style of writing and in your communication. So, but that's not the idea. The idea is that it has to be very clear, simple, easy for the client to understand. So therefore, be cognizant of it, that it may give you very flowery English and we want to sound very sophisticated. That doesn't mean that we have to make it complicated. So be aware of it. Okay, Gemini and all, we'll talk about it later today. In anyway, time has gone, and what are the other tools and chat GPT and all that we have? It's for session 2. Sometime whenever we get chance, we will again interact, catch up. So that was it for today. Gautam da, over to you. And if there are any questions, I'm happy to take. Yeah, Gautam da. I am sharing two things. Just Before that, any questions?
Now, after that question, Okay, 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 okay. Yeah, Sudip sir, question from my side. Oh, go ahead. Or do Yeah, you go to the? Can I take it now or like after you're done? yes, you can take. Okay, I arrange. okay. it's not a Okay. question, actually rather a suggestion for the benefit of the entire audience. There are lots of free resources, whether how to use chat gpt professionally, or I would say that you rightly pointed out that yes, we need to put in the right prompts and in the proper way, so that chat gpt also answers it in a proper way. So it will be very helpful if you could kindly share some links, videos or some links from where most of one can learn using ChatGPT professionally. I have been using it professionally, and there are various links from where you can just post your thoughts, and from those links, it will help you in generating professional grade prompts. So if Correct. these are possible, you can just share it So with us. what I We'll have share done it is with the that links. okay, good that you asked this question. That's what reminded me. Yeah. Okay, I have we at Motilal Oswal have recently released a 100+ prompt that you can copy and use it. So I will show that to you right now, and that I have posted it on my LinkedIn also. So anyone wants who this can follow me, DM me on LinkedIn, and I will give you this one to you, or you can also download it. Let me see my posts. 1 second. Can you see my screen? I'm showing my screen. 1 second. No, right? No. No, Gautam, no. just 1 minute. Huh? Okay, I'll okay, just take a minute. okay. So you can go to my LinkedIn, and there I have posted one thing, village article. Yeah, I want to show this post. Okay. So we have been conducting a session called Value Edge, Yeah. which is free for our financial advisors, and you must be Yes. receiving Yes. emails and all. Yeah. So what I've done over here is that what's been very exciting about Value Edge journey so far is seeing learning translate into action. Over the last 2 months, conversation around digital tools, content, and professional branding has evolved significantly. AI, Instagram, LinkedIn, and content creation are no longer viewed as optional additions, but an important enablers for growth in today's year. Now, to shift this, we are happy to share a 100+ AI prompt ebook that is created based on practical stuff. So, what you can do is that you can go there, click on this link, key in your ARN code, and while you key in your ARN code, you have to write like key in ARN hyphen, say one, two, Could, three. so Bolo? could you just share this link in the chat Yeah, for I the will just do benefit of that. the I participants? will just And do that. So, ARN, so 1, 2, 3, 4. Manlo, whatever is ARN, just key in that ARN, and I'm putting my mobile number 98349175. Download ebook. we cannot see the screen. Can you share Oh, you screen? cannot. Oh, sorry. So sorry. Cannot see the screen. Why? 1 second. 1 second. ताकि you Headphone down. disable 1 second. Yeah. enable the chat share. 1 second. Share screen. Share. Okay. Can you see my screen now? Yes, sir. It's Okay. visible. Sorry. I'm so sorry. So go to the LinkedIn post. Back. Okay. So you go to my LinkedIn. You can search by my name, Sudip Mondal. Right. And then there is that if you now here this is to continue the support this to continue supporting this shift, we're happy to share a 100+ AI prompt ebook, Okay. right? Wonderful. That created as a practical resource for our MOD partners by helping them simplify ideation, content creation, and day-to-day marketing effort using AI. Right. Okay. Now, if you click over here, it will ask you for your ARN code. Key in your ARN code, say ARN1234, and mobile number 9833491175. Download ebook. Okay. So now what I have done is I have created this prompt. Now you want to create social media post. So create an Instagram post for the first time investor explaining SIP using a 5,000 per month example and showing how it can grow over 20 years with CTA to DM SIP plan. So directly message me.
ठीक है, Right. with call to action also. Similarly, there are few examples of that. Then reel, you have to create reels, ठीक है, आजकल Right. reels और shorts चलता है, ठीक है. Right. So वहाँ पे SIP step up SIP awareness, delay versus start early reel, expense leakage reel, emergency fund awareness reel, goal based investing reel that you can do. Then first salary investment reel, ये सब reel बना सकते हो. Design and carousel बनाना है. Carousel मतलब Yeah. एक के बाद एक चार जो चला जाता है ना, मतलब Several एक में आप images, just कम्युनिकेट नहीं like an करते हो, album. एक स्लाइड चला Yeah. गया, दो स्लाइड, तीन स्लाइड में, हाँ, लाइक यस, लाइक एल्बम आपको रहेगा, करोजल बोलते हैं उसको, तो वो आप क्रिएट कर Right. सकते हो. राइट अ Right. कंटेंट फॉर अ 6-7 slide carousel targeting salaried individual in their 30s. Each slide should cover one mistake. Example: delaying investing, relying on FD, no diversification, no goal planning, stopping SIP during market fall. Add a short explanation plus one line fix for each mistake. Keep tone simple, urgent but educational. Now ये 6 स्लाइड का आपको एक बना के दे देगा, ठीक है. देन say for example visual branding, आप Yep. visual identity create करना चाहते हो, images. So create a detailed AI image prompt showing a middle class income couple in their late 50s 30s enjoying a peaceful financially, whatever, blah blah blah. You guys can read it at your pleasure. So carousel बन गया, reels बन गया. फिर आपको अगर वीडियोस बनाना है, we'll see this one by one as we progress. Yeah. We cannot cover so many Complete things, but package. Complete this package. book is very handy. You can download this book, right? And I keep on releasing such content, whatever value add that we do for our advisors and all. I take it a effort to put it on my page also. So if you follow this page, you will start getting those content, and it's very important for you all to be in LinkedIn. At least make your presence available over there. Do Okay. not LinkedIn, one or two social media, at least LinkedIn and Instagram is becoming very very popular. LinkedIn is for serious guys and Insta is for the young generations and all, right? Facebook is good, but it's becoming little like no obsolete now eventually, right? So वहाँ पे भी रह सकते हो आप. So one or two social media platform is extremely important for you to make your brand feel and to communicate that you are an expert in this domain, right? So this is an ebook that you can download. I think that will be a good year. I will share this link in the post itself. So 1 second, so that you all can follow it and take it from there. So that's a giveaway for today's session, which I think is appropriate and all. So I can copy this copy link post and post it over here chat. ठीक है? Yeah, got it, sir. Got it, no? Okay. Yeah. Done. Anyone else has got any question? Dakho, Vivek da, if you wouldn't have asked this question, I wouldn't have got reminded of this. So this ebook, because you asked that, I thought of sharing this, but I completely. No, I've been attending your value add sessions. Means Okay. they're definitely a value add, and I would recommend anybody or everybody get in touch with the respective RMs and make sure you guys attend. This is a wonderful initiative by Motilal Oswal, and everyone should use it to the max. Absolutely, you guys are doing an amazing work, and Thank you. heartfelt thanks on behalf of the entire audience and ICAM FD associations to actually make this session with so many call to actionable things, which made the session really really enjoyable. And I believe lots of guys amongst us who have not been using it professionally or might start using it from today, they will be more active on the social media and they won't feel shy before posting any content, because they have some relevant structure in order to how to approach, in order to generate prompts and right from posting to end. So the topic is so huge, but yes, you summed up the entire session in such a wonderful and short time. A heartfelt thanks from the entire audience to you, sir. Thank you very much. সুদীপ, Thank you, Vasudha. Thank you, Vivek. Thank you, everyone. Yeah, Vasudha, bolo. হ্যাঁ, শেয়ারিং করছি। দেখো এই চ্যাট জিপিটির ফাইন্যান্সের কিভাবে ইউজ হচ্ছে এবং ছোট ছোট জিনিসগুলো কিন্তু তোমার বেরিয়ে যাবে। 1 মিনিট আবার শেয়ার করে দেখাচ্ছি। And Sudip sir, I have sent you a connection request on LinkedIn. Sure. I'll just do it right now. Very good session, Sam. Thank you. I have received a lot of new things which I don't know earlier. Thank you, sir. Great. Thank you. Glad to know that. Sir, one question.
Sir, Yes. actually some of my staffs are also using the Chat GPT. So Mhm. for them, what would be your suggestion to just open another Chat GPT, or in the same Chat GPT just make different project and use? See, that depends. Like, see what is important for you. Hmm. What is important for you? Now, imagine you know, what is your objective? Your objective is that, which you have not stated, but I can understand. Your objective is that whatever my staff is saying should be what the ideology or philosophy towards investment that you are following. That your staff should also get it. It is not that you are practicing long termism, you are practicing all the right behavior that you want your clients to know, but is your staff equipped to replicate or talk in the same line that the way you are thinking, right? That is what you need to ensure for. Now, for that, you need to create a do and don't of communication. Like what you should how they should communicate, what they should communicate, and what they should not communicate. So do and don'ts of communication for your particular organization you have to create, right? You can create that using chat gpt or whatever, right? Now you tell your staff that, guys, whatever you are writing, this is the framework of communication that you need to follow, right? And then whether they if they get that framework correct, right, whether they use it individually or they use it in a common platform, you just need to ensure couple of times of the result that or the output that it is coming and they are circulating to your client is in line with your thought or not. That is more important. They can use their own individual one, they can use their in one chat gpt for the firm, but it doesn't matter. What is important is that the output जो आ रहा है ना वो आपका ये आ रहा है कि नहीं रहा है. Now one way of, if you are using it one as a form, then the chat gpt history mein you get everything, right? In that history you get everything. In that history, if there are any correction required and all, then that machine is learning all those correction and all, not an individual machine. So from that perspective, it is advisable to have one, but there are limitation in chat gpt also, like how many prompts you can write and all. Tomorrow it shouldn't happen that they free usage ke liye they have a prompt restriction and all of that can happen very easily. Sir, actually, I'm using the Grow version. You are using the Grow version. Grow which version, version? sir. Grow Grow version. version. Yeah. Acha, the paid one. Yes, sir. Okay, great. Then use it for your form, no? Then have one account. But sir, then they can able to see my Chat Ah, GPT also. at least no. You should not. See, privacy is also very important. Now, so therefore, like I would suggest is that let your you should have one for yourself and one for your team member, which they can share. But your stuff you should keep it separate, Sir, because in many a times you may also ask Chat GPT saying that, look, no, this guy is not performing. How do I give this feedback in a constructive manner? So that chat you can do with the machine that you don't want your clients to or your team members to know, right? So some critical feedback you want to give okay, in but a in positive one, frame and all. but sir, Those are in important. one, but in one window, can I just open two Chat GPT simultaneously? Is it possible? Yeah, to browser you can open it. Okay. I got it Aram now. se you can open it. Should Thank you, not be a sir. problem. Thank you Yeah. very much. Thank you very much, sir. And Thanks, sir. irrespective, because your chat is happening through your, because you are when you are logging in, either you're using a Google account or any account, so all the chat repository will be there in your recent chat list. Mm-hmm. Hmm. Got the Okay. point, sir. Thank you very much. Thank Okay. you very much, sir. Let's do this. सुदीप दा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग संजय दे, बोलिए। ये मैंने आपका अभी जो ये प्रॉम्प्ट वाला जो आप लोगों ने अभी बुक शेयर किया था वो मैंने वो डाउनलोड किए? वेबिनार मैंने अटेंड किया था और हम्म, काफी अच्छा था। हम्म। लेकिन एक चीज पूछना था दादा कि वो जैसे अभी आजकल जो कंप्लायंस का जो इशू है सेबी एमसी का जो है तो जो संजय भाई स्क्रीन शेयर देख रहा है क्या? हाँ अभी देख रहा है दादा। দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে बट साउंड नहीं आ रहा है। साउंड तो है।
नहीं, साउंड नहीं आ रहा दादा। No, you have to reshare it with your sound option on. Yeah. तो दादा मेरा एक सवाल था ये, हाँ, बोलिए बोलिए संजय ये जैसे अभी जो कंप्लायंस का जो इशू है, जो बातें हो रही हैं, तो जो चैट जीपीटी या फिर जो भी चीजें इस पे आ रही है, तो हम लोग शेयर करेंगे तो पब्लिकली अगर मान लीजिए कुछ उसमें प्रॉब्लम आ सकता है ना, वो कंप्लायंस इशू हो सकती है, तो उसको कैसे टैकल किया जाए? नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक तो ना चैट जीपीटी, ये मुझे बोलना चाहिए था, ये चैट जीपीटी ना उसी के लिए यूज कीजिए और उसी सब्जेक्ट में यूज कीजिए जिस सब्जेक्ट में आपका जानकारी हो। डोंट हम्म। यूज चैट जीपीटी बिकॉज चैट जीपीटी विल गिव यू आंसर फॉर एवरीथिंग। ठीक है, आप यस। जैसे आपका डोमेन के लिए यूज कर रहे हो, कोई मेडिकल साइंस के लिए यूज कर रहा होगा, कोई इसके लिए यूज कर रहा होगा, कुछ के लिए यूज कर रहा जी होगा। जी। ठीक है, नाउ से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उस डोमेन के एक्सपर्ट नहीं हो, यू कैन नॉट जज वेदर द आंसर इज राइट और रॉन्ग। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, यस यस। जो भी चेंजेस का ये आ रहा है ना, सेबी रेगुलेशन आ रहा है, व्हाट यू कैन डू इज दैट, जो भी रेगुलेशन आ रहा है, जो मैं क्या करता हूँ, रेगुलेशन आया है, आई विल टेक द रेगुलेशन, अपलोड इन चैट जीपीटी एंड से दैट सिंप्लीफाई इन 100 वर्ड्स व्हाट इट मीन्स। ठीक है, सो सेबी ओके का अभी क्या हो गया कि देखो, एवरीथिंग इज इन प्रिंसिपल। सेबी क्या बोलता है कि ये एडवर्टाइजमेंट सही है कि गलत है ना, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको देख के करना है कि ये दुनिया में कोई भी पढ़ के उसको ना मिसलीड नहीं करे, इससे कोई गलत डिसीजन ना ले ले। दैट इज योर हम्म। ओनरशिप। ओनरशिप आपका यस। है, वो किसी और का ओनरशिप नहीं है। सो देयरफॉर आप अगर एक डिस्क्लेमर, जैसे आप हमेशा जब भी लगाते हो ना, एक डिस्क्लेमर लगाओ कि दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, no investment, this is not an investment advice. If to take an investment decision, please consult your financial advisor or your my mutual fund distributor, whatever, blah blah, and write that, put appropriate disclaimer, बस इतना ही लिख देना। जो प्रॉम्प्ट है ना उसमें लिखना put appropriate disclaimer, तो वही सोच के डिस्क्लेमर लगा लेगा कि क्या appropriate disclaimer हो सकता है जो आपको बचाएगा। ओके पॉइंट नंबर ओके ओके। पॉइंट नंबर टू, अभी क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देना हर एक इसमें ये है, रिलीज बाय ये सोर्स और रिलीज बाय दिस वन फॉर एजुकेशनल पर्पस, रिलीज बाय ईयर एंड कोड, वो देके दे दो तो ऑथेंटिसिटी मिलता है आपको। दैट इज ऑल, देयर इज नो, तो कुछ ऐसा तो आप नहीं कर रहे हो कि सेबी कल को विच इज वेरी मिसलीडिंग एंड पीपल आर यू नो आपका वो देख के डिसीजन ले रहा है, मिस सेलिंग डिसीजन ले रहा है और कंप्लेन भी कर रहा है। दैट्स वेरी रेयर। अंटिल, देखो जो भी केसेस मैंने देखा है, सेबी ने या एमफी ने एक्शन लिया है, दोस आर एक्चुअली breaching the trust, like someone collecting cash in place of SIP and not investing and putting it in his own account. ठीक है, those kind ओके of cases people will take action for. Not I have seen in अगर एक गलत कम्युनिकेशन से चला गया तो आपको वार्निंग मिलेगा, फाइन मिलेगा, मतलब वही होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना नहीं है वो। और वो अरेस्ट कैसे कर सकते हैं कि चैट जीपीटी से लिखे हैं, उसका डिस्क्लेमर लेके निकालो। ठीक है, ओके। अगर और वो इंटेंट सही रखो। देखो, आपका ना ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, सोशल मीडिया में यूज क्यों कर रहा हूँ, व्हाई आई एम यूजिंग सोशल मीडिया, एम आई यूजिंग सोशल मीडिया टू गेट मोर, शो माई सेल्फ ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट, एम आई यूजिंग सोशल मीडिया फॉर माई ओन पर्सनल ब्रांडिंग और रीच के लिए, किसके लिए यूज कर रहे हो। तो दो चीज मेरे को लगता है सोशल मीडिया यूज करना चाहिए आपको, ये लिंक्डइन में पोस्ट बनाओ या ये आपको दिखाना है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, बात करेगा और डिस्क्लेमर के साथ बात करेगा। तुमको पर्सनल एडवाइस लेना है, मेरे पास आओ, या आई विल व्हेन यू आर ए क्लाइंट टू मी, आई हैव अ डिफरेंट, ठीक है, राइट। नाउ अंदर कैसे जी। बिहेव करना है, 3 दिन से 30 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर कैसे बिहेव करना है, वो एक सेपरेट कि कोई और दिन से करेंगे, विल डू समथिंग सम टाइम व्हेन यू मीट, विल से हाउ कैन यू एनहांस योर ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस, पहला 3 दिन में क्या करना चाहिए क्लाइंट के साथ, पहले 90 दिन में क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए। ठीक है, सो दैट क्लाइंट 10 साल तक ठीक है। ये सब का एक साइंस है, इज देयर अ साइंस बिहाइंड इट, ये और रॉकेट साइंस नहीं है। आपको जानकारी हो जाएगा तो आप यूज करना चालू कर दोगे। क्या होता है कि हम लोग वैसा सोचते नहीं है, उसे विंडो जी। ओपन करना है, उस तरफ का सोच को एक्टिवेट करना है, दैट्स ऑल। ठीक ओके है, ओके ओके। सो विल डू जी। दैट इन सम अदर टाइम। ठीक है, ओके आज आप लोग ओके। 1 घंटा ले लिए, सब जाम हो गया, इतना ही अगर समझ में आ गया, 2-3 चीजें काफी है। बट नहीं, आई यस थिंक यस यस। वी कैन एंगेज मोर, लाइक विवेक जी वी कैन एंगेज, संजय जी वी कैन एंगेज मोर। जो Absolutely. कि एक Absolutely. यस। छोटा टॉपिक लेके उसका डीप में जाना चाहिए कि व्हाट इज द साइंस दैट वन कैन अप्लाई टू मेक इट, ओके। टू इम्प्रोवाइज दैट, और साथ में सीखना। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है।
In fact, after the end of this session, all the members of our group will get a special surprise. That too, the entire meeting has been summarized and notes have been taken. You guys will be amazed how AI has been working in the background. So Correct. just So, wait for some time once the you know, meeting gets. We'll share the summary of the entire meeting with. Right. there is a recording on that. Yeah. Great, fantastic, great. Yeah, Gautam da, over to you. Yeah, he's trying to share some video regarding Claude. Leave the this problem with the audio. विवेक भाई, Yes. विवेक भाई, एक जीएसटी बिलिंग अपलोड पे भी एक तो शॉर्ट सेशन रखिए. I believe अपने को ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे के फिनटेक का तो सेशन हो ही रहा है. कोई दिक्कत है वहां पे तो बताइए. यस, लगातार हो रहा है इस समय तो. जीएसटी कैम्स और कार भी दोनों ही लगातार कर रहे हैं. हाँ, और हो गया, ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो गया. मैंने तो अपने कैम्स के फिनटेक का सारा हमारा अपलोडिंग एंड एवरीथिंग कंप्लीट कर लिया कल तक सारा. आप लोगों का सारे डाउनलोड हो गया था क्या बिल? इनवॉइस आ गया है? इनवॉइसेस डाउनलोड हो गई, डिजिटली साइन भी हो गई, अपलोड भी हो गई. ओके, एंड व्हेन डिजिटली साइन कर दें तो प्रिंट आउट लेने की आवश्यकता नहीं होगी? हाँ, डिजिटली साइन करना तो प्रिंट आउट लेने की आवश्यकता नहीं है. डीएससी से अपना कर लीजिए. वो तो सीधे अपलोड कर देंगे साइन करके. जी. सर, वो जीएसटी का जो फिनटेक और कैम्स वाले लगातार मीटिंग कर रहे हैं, इसके बारे में लगातार मीटिंग कर रहे हैं वो. राइट. कैंप्स का तो नहीं देखा, के फिनटेक का देखा था. कर रहा है. नहीं, वो भी हो रहा है दादा, सबका हो रहा है, दोनों लोग का हो रहा है. कैंप्स वाले संजय जी तो एक बार अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा ना. कैंप्स बहुत लोगों ने अटेंड नहीं किया है. हाँ, कैंप्स का नहीं अटेंड हुआ. अभी आज ही था 11 बजे, आज था, मतलब आज तो ओवर हो गया. मैं अगला वाला आता हूँ, मैं शेयर करता हूँ, जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोनों का ही सिस्टम अलग है. जीएसटी फाइल करने का कैंप्स का अलग है, फिनटेक का अलग है. जरूर मैं अभी नेक्स्ट वाला आएगा तो मैं शेयर कर दूंगा सर. जी. ग्रुप में भेज दीजिएगा संजय जी. हाँ, बिल्कुल, श्योर. संजय जी. हाँ जी दादा. ये जो आप बोल रहे हो ना सोशल मीडिया हैंडलिंग, वो एमपी का जो गाइडलाइन है उस देख के आपको करना पड़ेगा. यस, यही मैं पूछ रहा था दादा. मेन चक्कर यही है कि हाँ, वो थोड़ा वेट कीजिए. ये हम लोग को नेक्स्ट मंथ तक पूरा क्लैरिटी आ जाएगा. नेक्स्ट मीटिंग में इस मंथ में क्लैरिटी नहीं आया. देखो, उसमें आपको ना, आपका अभी जो भी सोशल मीडिया पोस्ट करोगे, आप अपना ARN कोड डाल के करना. वो तो नहीं दादा, वो तो डालना है, बट उसके भी सर्टेन क्राइटेरिया कि आप क्या लिखोगे क्या नहीं लिखोगे. आप कुछ एडवाइस नहीं कर पाएंगे. मेन बात है. यस, बिल्कुल. एंड देन मेन बात है. करेक्ट. और उसमें ना अपना जीएसटी नंबर अगर लिए है तो वो भी देना पड़ेगा शायद. अभी तो फिलहाल डिटेल तो सारा डिटेल तो शेयर करना पड़ेगा. हाँ, अभी तो फिलहाल एम्फी कोड, APRN अगर आपने PMS का ले रखा है वो, और SIF का डिटेल्स देना है, और अलॉन्ग विद द म्यूचुअल फंड डिस्क्लेमर. एज सच जीएसटी का अभी तक देखा नहीं मैंने. जीएसटी नहीं, ये रजिस्ट्रेशन नंबर, सॉरी, रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग शेयर कर रहे हैं अपने कंटेंट में. SIF का रजिस्ट्रेशन नंबर और एम्फी का रजिस्ट्रेशन नंबर. एम्फी का PMS में किया तो APRN नंबर भी शेयर करना है. APRN नंबर शेयर करना है. करेक्ट, सॉरी, शेयर करना है. और GST1 योर रजिस्ट्रेशन नंबर हैज टू बी शेयर्ड. राइट. और किसी भी का जो हमने कंटेंट देखा है कि क्या चीज की गाइडलाइंस है, उसमें ये देखा है कि आप कंटेक्चुअली किसी चीज पे बात कर सकते हो, किसी फंड हाउस का नाम नहीं ले सकते हो, किसी तरह के अश्योरेंस नहीं दे सकते हो. आप कंटेक्चुअली अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हो कि ये अवेयरनेस फैलाने के जिसको पर्पस की तरह इस तरीके की वीडियोस बनाने हैं, जो हमने समझा है अभी तक. और वो डिस्क्लेमर जो है ना, वो डिस्क्लेमर का एक टेम्पलेट बना के पहले देना, अंत में देना. पहले और बाद में दोनों कंपल्सरी हो गया. तब सही रहेगा. नहीं तो एनी मोमेंट यू विल बी आस्क्ड फॉर. That's true, Gautam. And next week our physical workshop is happening in Kolkata. 50 people 23rd. Yes. First of its kind, the entire compliance related issues for MFDs. Everything will be answered and everything will be taught practically, and each and every participant will get a physical handbook, so that post that class also he and his entire team can actually follow the compliance. So that's a very exhaustive workshop that's going to be conducted in Kolkata next week on Saturday, the 23rd of May.
And this is 50 people only. Yeah, 50 people is been, so registrations are closed. And the 2 days are already cleared. If anyone, required more people, then we can think another batch for Yeah. next month. Next month. Yeah. Another batch possibly for next month. If they are interested. Then otherwise no. So thank you, Sudip. Sudip. Yes, Sudip says, yeah. Yes, thank you Yeah. very much. So Thanks a lot, sir. No, Means it was সুদীপ কিছুতেই করতে চাইছিল না, আমি জোর করেই বললাম না এই পরের সপ্তাহে আমাদের তারপরে বললাম না এইটুকুনি যা আছে এটাই অনেকে জানা। At least we have this right to ask you to conduct these sessions on an urgent basis. No. So thanks a lot. No, that's great. That's great. No, actually, yeah, what has happened is that now that this basic stuff is done, Right. we can move to the advanced one. Now Absolutely. creating website in a click of a button, Right. creating calculators. I was amazed. You know, there is a lot of other tools, emergent.ai and all. Using that, you can create your own app, mobile app. Mobile app and website. Yes. In a click of a button. At the click of a button. You Right. need not be an advanced programmer or a coder. Yes, you do not have to be. Yeah. So we'll see those tools also at some other time. Yeah. But thank you for giving the opportunity. Really appreciate it, and it was a good interaction. So Absolutely. thank you very much. The pleasure is ours. Looking forward to interacting with you very soon. You can attend next week, but next Saturday na coming. Yeah, next Saturday 23rd. 23rd না, তারপরে কত হচ্ছে? তারপরে আসছে আপনার 30 তারিখ। You can second part 30th you can do. Follow-up sessions if it suits your schedule. We can arrange a follow-up session related to this topic. Sure. Okay, sir. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Bye-bye. Take care. Have a nice day. Bye. Bye. Okay. Thank you, everyone.